Hello friends, myself Ankush Gupta, faculty at the Gate Coach. So today we will talk about a topic, mixing of solids from the subject mechanical operation. As you know that this topic is one of the important topic from Gate point of view, because in last 10 years अगर हम बात करते हैं तो last 10 years में Gate exam में इस topic से almost 6 to 7 questions Gate exam में आए हैं और काफ़ी simple questions आए हैं. बट क्वेश्चन सिंपल तभी होता है जब हमें उसके बारे में कुछ पता होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट मिक्सिंग. वी विल टॉक अबाउट इट इन ब्रीफ टुडे. आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट व्हाट इज मिक्सिंग, देन something about agitation, then I will tell you something about axial and radial flow impellers, and at last I will tell you about power requirement in mixing. So let's start the topic. Mixing. What is mixing? In simple words, if we say mixing is simply addition of two or more components means, let's suppose if you have a beaker, put component A, component B and suppose component C. So this addition of these components is called mixing. But technically अगर हम बात करें so you can say that mixing is simply dispersion of one component to another. So what do you mean by dispersion? अगर हम उसकी बात करें तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज डिस्पर्जन. सो आई वुड लाइक टू टेल यू the difference between dispersion and diffusion by taking a simple example. If we talk about diffusion, then you know that diffusion is simply molecular transport from high chemical potential to low chemical potential, or in other words, at isothermal condition, molecular transport from high concentration region to low concentration region, that is diffusion, and this is a natural phenomena. Or you can say that is a spontaneous process. So, and dispersion is simply a distribution of particles, distribution of molecules due to some एक्सटर्नल फोर्सेस. क्या मीनिंग है इसका अगर हम बात करें तो अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, सपोज इफ यू हैव अ बीकर फिल ऑफ वाटर एंड वी जस्ट ड्रॉप एन इंक, देन यू नो दैट वाटर इज स्टेशनरी, और अगर आप उसे देखो तो वाटर इन लेयर्स की फॉर्म में इस तरह से प्लेस होता है. यहां पे आपने इंक ड्रॉप किया and due to concentration difference along this section, this length, these ink molecules will move in this direction, vertically downward in a straight line, and this, and hence अगर आप इसकी concentration profile देखते हो, that will be a flat profile. This is diffusion जो आपका ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस हो रहा है इन नेचुरल
वे इन स्ट्रेट लाइन। बट अगर हम डिस्पर्जन की बात करते हैं तो डिस्पर्जन में क्या होता है आपका, सपोज अगर आपका फ्लूइड लेयर मूव कर रहा है लाइक अ रिवर फ्लो, तो उसमें आपका क्या होता है, फ्लूइड फ्लो करता है लाइक दिस, एंड यहां पे अगर आप ड्रॉप प्लेस करते हो इंक की, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस मॉलिक्यूल्स ने आपका डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट तो किया, बट सिंस फ्लूइड इज मूविंग, फ्लूइड इज इन मोशन, देन ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ड्यू टू दिस वेलोसिटी इन फ्लूइड लेयर्स क्या होंगे, आपके वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एंड हेंस अगर आप इसकी प्रोफाइल देखते हो तो इसकी कंसंट्रेशन प्रोफाइल आपकी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोफाइल आती है लाइक दिस, देयर विल बी सम डिस्ट्रीब्यूशन of molecules, and this distribution takes place due to the velocity, due to the motion in this fluid. So that is dispersion, which caused by some external forces, and diffusion is simply natural phenomena. तो अगर आप यहाँ लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर करोगे तो डेफिनेटली ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस मॉलिक्यूल्स आपके इस डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. But we don't need to talk about that. If you want, you can say that is diffusion followed by dispersion. So I hope now it is clear that for dispersion means there is some external force involved. So वापस हम यहाँ mixing पे आते हैं. हमने कहा mixing is dispersion of one component to another. It means कि mixing आपका तभी possible है when there is some external force. तो external force की अगर हम बात करते हैं तो mixture में external force क्या होता है कि see, suppose if this is a mixing tank, you put component A, component B together, there will be some random distribution of the molecules initially. Initially, there will be random distribution of molecules. So, to make it uniform, we required dispersion. So to increase the rate of dispersion, हम यहाँ पे आपका एक impeller यूज करते हैं, and due to the rotation of this क्या होता है, इस फ्लूइड मॉलिक्यूल्स में, इस मिक्सचर मॉलिक्यूल्स में एक फ्लो करंट जनरेट हो जाता है एंड मॉलिक्यूल्स आपके मूव कर स्टार्ट कर देते हैं. सो मॉलिक्यूल्स आपके मूव कर रहे हैं तो क्या है, दिस मॉलिक्यूल्स आपके मूव कर रहे हैं तो सिंपली देयर इज अ डिस्पर्जन, एंड ड्यू टू दैट डिस्पर्जन देयर विल बी सम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द मिक्सचर, एंड इस रोटेशन की वजह से, इंपेलर के रोटेशन की वजह से फ्लूइड मॉलिक्यूल्स मिक्सचर मॉलिक्यूल्स में फ्लो जनरेट हो रहा है. सो दैट जनरेशन ऑफ फ्लो करंट्स in mixture is called agitation. So generation of flow currents in mixture is called agitation. Means आपको अगर मिक्सचर मॉलिक्यूल्स में आप फ्लो करंट्स जनरेट करते हो तो वो एजिटेशन होता है. वो आप कैसे भी कर सकते हो. सिंपली सपोज दिस इज वाटर बॉटल, ये आपको मिक्सचर मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टेशनरी हैं. अब आप इसे अगर शेक करते हो तो मिक्सचर मॉलिक्यूल्स में एक मोशन से क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड एजिटेशन. ये आप शेक करके भी कर सकते हो, वाइब्रेट करके भी कर सकते हो, और इंपेलर की हेल्प से भी कर सकते हो. ओके, सो आई होप आप सभी को अब डिफरेंस क्लियर है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजिटेशन एंड मिक्सिंग? Mixing is simply dispersion of one component to another, and agitation is generation of flow currents in mixture. So we can say that agitation is required for mixing, because due to agitation mixture molecules में dispersion होता है, and due that dispersion is called mixing.
simply. So that is all about your mixing and agitation. Now we will talk about simply what is the difference between axial flow impeller and radial flow impeller. So this is axial flow impeller and radial flow impeller. अगर हम बात करते हैं तो see, you know that suppose if there is a tank, this is called impeller, this is called impeller shaft, and there is suppose motor, and the combination of this motor, impeller shaft and impeller is called agitator or agitation device simply. तो axial flow impeller क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो axial flow impeller is where generation of flow currents occur parallel to the impeller shaft, or you can say in the axis of impeller. Means suppose if we have this tank, this is impeller, this is impeller shaft, and flow currents are generating parallel to the impeller shaft. So that is called axial flow impeller. While radial flow impeller, I guess आप सभी को clear होगा, radial flow impeller is when generation of flow currents take place perpendicular to the impeller shaft. That is, suppose if we have this tank, this is impeller shaft and this is impeller blade. So this is impeller shaft and flow currents are generating perpendicular to this impeller shaft. So that is called radial flow impeller. And usually axial flow impellers are used for low viscous mixtures, and its examples are propeller, and radial flow impellers are used for highly viscous mixtures, and its examples are turbines. So अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करें अबाउट एक्सियल फ्लो इम्पेलर एंड रेडियल फ्लो इम्पेलर, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये सीलिंग फैन जो आप अपने रूम के रूफ पे देख रहे हो. ये दिस इज इम्पेलर शाफ्ट एंड दीज आर द इम्पेलर ब्लेड्स लाइक दिस. तो इस केस में अगर आपके जब आप इसे फैन को ऑन करते हो तो एयर का मूवमेंट क्या होता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो आप देख सकते हो कि इम्पेलर शाफ्ट एंड एयर मूवमेंट दैट इज इन पैरेलल, सो दैट इज योर एक्सियल फ्लो इम्पेलर. बट सपोज इसी फैन में जो आपके इम्पेलर ब्लेड्स हैं लाइक दिस, अगर आप उन्हें 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हो इस तरह से, इस ब्लेड को अगर आप 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हो लाइक दिस, देन आप इसे अगर ऑन करोगे तो एयर का मूवमेंट क्या होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द इम्पेलर शाफ्ट. सो दिस विल बिकम द रेडियल फ्लो इम्पेलर इन दैट केस. So this is all about your axial flow and radial flow impeller. Now we will talk about the power requirement for mixing. For Newtonian fluid mixture and
baffle tank, power required is given by P over rho n cube di की power 5 as a function of rho n di square over mu n square di over g and so on. So in this case, this P is the power required in watt. This rho is the mixture density in kg per cubic meter. This n is the impeller speed in RPS, and mu is the viscosity of mixture in SI units, that is Pascal second, and di is the impeller dia, obviously in meter, and g, you know that, acceleration due to gravity, which will be in meter per second square. So this is the relation of power requirement, and in this case this term P over rho n cube di की power 5 represents the power number. Second term rho n di square over mu represents Reynolds number of mixing. You can denote it by NRE. And the third term n square di over g represents the Faraday number. You can represent by NFR. So this is the equation for power requirement in mixing. तो हम इसमें एक्चुअली यूज कैसे करते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा मिक्सिंग का, उसमें देयर विल बी सम पैरामीटर्स, and with the help of those parameters you can calculate the Reynolds number of mixing, and for different Reynolds number of mixing there is a relation of, there is a value of power number. Okay, because you know that what is Reynolds number? Reynolds number is simply the ratio of inertia force to the viscous force within the fluid, and if initially आपका inertia force लेस होता है और विस्कस फोर्स डोमिनेट करते हैं, इन दैट केस रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आपकी स्मॉल होती है जो आपका रिजाइम होता है. सेकंड केस होता है इसमें व्हेन इनर्शिया फोर्स आर डोमिनेटिंग एंड विस्कस फोर्स आर लेस. तो इन दैट केस आपका इनर्शिया फोर्स जब डोमिनेट करते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हाई होती है जो कि आपका टर्बुलेंट रिजाइम होता है. बेस्ड ऑन दैट पावर नंबर का भी जो वैल्यू है वो रेनॉल्ड्स नंबर के साथ वेरी करती है, जिसे आप इस कर्व की हेल्प से समझ सकते हो. पावर नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर में एक कर्व गिवन होता है आपको ऑन लॉग पेपर. तो ये कर्व होता है आपका लाइक दिस, जिसमें आपका कर्व फॉर n लेस देन 10 एक स्ट्रेट लाइन होता है, देन फ्रॉम 10 to 10 की पावर 3 स्लोप उसका वेरी करता है, एंड देन आफ्टर 10 की पावर 3 दैट इज कांस्टेंट. तो इनिशियली उसका स्लोप होता है -1, देन स्लोप वेरी करता है फ्रॉम -1 to 0, एंड देन स्लोप विल बी 0. एंड दिस इज द फर्स्ट डिजाइन, दिस इज सेकेंड डिजाइन, एंड दिस इज थर्ड डिजाइन. सो हम इसका यूज कैसे करते हैं? आपको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है. विद द हेल्प ऑफ दैट रेनॉल्ड्स नंबर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर नंबर. And when you know the value of power number, put that value in this equation and you will get P, which is the power required for mixing. Okay. Anyways, but आपके गेट में इस टॉपिक से काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं. गेट में आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि पावर आपका N और DI के ऊपर किस तरह से रिलेट करता है, इम्पेलर स्पीड एंड इम्पेलर डाया पे. तो वो हम चेक करते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डिजाइन. When Faraday number is negligible, हम उस केस की बात कर रहे हैं. और Faraday number negligible होता है आपका when
Reynolds number is less than 300, when that is your baffle tank, or you can say vortex formation is negligible. Actually क्या होता है, you know that vortex Faraday number का significance क्या होता है? It is the ratio of inertia force to the gravity force. And gravitational force आपके सिस्टम में एक्ट करते हैं only when there are some vortexes. Otherwise gravity force को हम neglect कर सकते हैं, उनका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है. So baffle tank है, आपको पता है baffles हम यूज करते हैं to prevent the formation of vortexes. So जब कोई vortex नहीं है तो रेनॉल्ड्स नंबर भी लेस होगा और वहां पे कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं होगा, तो इन दैट केस फ्राडे नंबर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो जब आप फ्राडे नंबर को नेग्लेक्ट कर सकते हो तो हम पावर नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर में डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं. दिस में क्या होता है आपका, अगर हम फर्स्ट रिजाइम की बात करते हैं तो फॉर फर्स्ट रिजाइम वेयर रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, दैट इज ऑल्सो नोन एज laminar regime or laminar flow regime. So in this case you can see that power number is inversely proportional to Reynolds number like this, and you know that what is power number, that is P over rho n cube di की power 5. Reynolds number is rho n di square over mu. So from this case P is directly proportional to n square di की power 3 for laminar regime. This is the power requirement. Same way में for third regime where Reynolds number is greater than 10 की power 3, or you can say that is your turbulent regime. In that case you can see from the curve that power number is independent of Reynolds number. Its slope is 0. So power number is constant and power number is P over rho n cube di की power 5, which is constant. So you can see that power number P is directly proportional to n cube di की power 5 for turbulent regime. So that's how you use power equation, power number and Reynolds number. अब इसमें आपके गेट में काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर हम बात करें, और सिंपल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. There was a question in gate 2004. उसमें आपका क्वेश्चन था for same power input, if impeller dia is increased by 20%, then impeller speed will decrease by a factor of what? ये आपका क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया था. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड ऑब्वियसली आपको गिवन था फॉर high Reynolds number means regime. So you know that for high Reynolds number power number is constant, that is P over rho n cube di की power 5, that is constant. So for same power input rho obviously that will be constant. You can see that n cube di की power 5 will be a constant value. Or you can write it as n1 cube di1 की power 5 is equal to n2 cube di2 की power 5. So from here we have n2 over n1 is equal to di1 over di2 की whole power 5 by 3. So here in this question they given that impeller dia is increased by 20%. That is di2 is 1.2 times of di1. So you can see that n2 over
N2 will be, in this case, N2 will be N1 times of 1 upon 1.2 की power 5 by 3, or you can say N2 is N1 upon 1.2 की power 5 by 3. So denominator value will be greater than 1, so simply N2 will be less than N1. So you can simply say that impeller speed will decrease by a factor of 1.2 की power 5 by 3. That is the answer you required. So इस तरह के और भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, वो आप लोग देख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है. So that's all for this topic. इस टॉपिक में और भी आपके काफी पॉइंट्स हैं जो आप लोग खुद स्टडी कर सकते हो, जो हमने इस स्मॉल ड्यूरेशन में, ऑब्वियसली 10-20 मिनट्स का हमारा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम नहीं डिस्कस कर सकते थे सब कुछ, तो उसमें आपके दूसरे पॉइंट्स हो जाते हैं लाइक व्हाट इज प्रोपेलर, व्हाट इज इम्पेलर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉडे नंबर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, पावर नंबर का यूज आप किस तरह से कर सकते हो, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे डिफाइन करते हो, डिजाइनिंग ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट्स एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आप स्टडी कर सकते हो. Anyways, if you have any query regarding this lecture or any other thing, you can mail us at this mail ID, and for more videos just like, subscribe and share. Thank you.